Today's our topic is water. This is the most important topic. Okay, listen it very carefully. So यहाँ से करेंगे बेटा, आज हम यहाँ से है आपका टॉपिक स्टार्ट आज का. Okay, what is the importance of water in our life? Water is necessary for our bathing, for drinking, for plants also, for animals also, for cleaning purpose also. So water is also the most important factor for human beings, animals and plants. Then 71% of earth is covered with water. हमारी जो अर्थ है वो 75% अर्थ से कवर्ड है. 71, ये देखिए बेटा. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि हमारी जो अर्थ है उस पे 1 एरिया ही लैंड है, अदरवाइज ऑल इज कवर्ड विद वाटर. सो दिस 3 पोर्शन इज कवर्ड विद वाटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर में, वो वाटर साइकिल है. यू हैव टू नो दिस. व्हाट इज अ वाटर साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल द सरफेस वाटर इज गेट्स हीटेड बाय द रेज ऑफ सनलाइट. सबसे पहले जो सनलाइट की रेज अर्थ पर पड़ती हैं सरफेस ऑफ वाटर पर, वो क्या करते हैं वाटर वेपर्स को, वाटर को वाटर वेपर्स की फॉर्म में बना देती है. जैसे आप कपड़ों को, क्लोथ्स को, वेट क्लोथ्स को आप ड्राई होने के लिए डालते हैं, तो वो वाटर बेसिकली जाता कहाँ है? इट विल गो इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. सो जब ये वाटर स्मॉल स्मॉल वेपर्स के फॉर्म में एयर में जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, क्लियर है? जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, देन दिस वाटर वेपर्स goes into the higher atmosphere. Okay, these condense in the cloud. Condense means होता है collect होना. Okay, when these water vapors collect into the clouds, this process is called condensation. When these clouds becomes too heavy, जब ये clouds बहुत heavy हो जाते हैं, so ये किसके फॉर्म में fall down हो जाते हैं? In the form of rain, hail or snow. I will repeat again. There are 3 processes of water cycle. Number 1 is evaporation, 2 is condensation, and 3 is precipitation. First is evaporation, when the surface water gets heated by the heat of sunlight and evaporates in the form of water vapors and mix into the air. That process is called evaporation. When this water vapor reaches to the higher atmosphere or in the cloud and condense means collect hona, condenses into the form of water, that process is called condensation. When these clouds becomes too heavy, cannot carry the load of water, they will fall into the form of rain water, hail or snow. Snow के form में ये क्या हो जाते हैं? अर्थ पर गिर जाते हैं. So that whole is called like a water cycle. So here is the definition of water cycle evaporation. First of all, evaporation. When the surface water heated, जब ये surface water heated हो जाता है and convert हो जाता है into form of water vapors and mix into the air, that process is called evaporation. Okay. The second one is condensation. When these water vapors, जब वो हवा से water vapors higher atmosphere में जाते हैं and condense into the form of water and there they cool down, that process is called condensation. Third process is called precipitation. When these clouds don't carry the load of water or when the clouds becomes too heavy, it will fall down in the form of rain, hail and snow. And this process is called precipitation. Clear everyone? Okay. Next is conversion of water. What is conversion of water? There are 3 states of water. Water की 3 states होती हैं, देखिए. Solid, गैस और लिक्विड. गैसेस वेपर्स जो कि हमने अभी किए थे, वाटर वेपर्स, स्मॉल स्मॉल वेपर्स. सॉलिड मीन्स आइस एंड लिक्विड मीन्स वाटर. These are the conversions. You have to learn this. Okay, I will explain you. Then you have to learn this. ये बेटा लर्निंग मटेरियल है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा इसको. So take a look on this diagram. First of all, when ice convert into the form of water, that process is called melting. जब आइस को हम वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग. सेकेंड वन इज when water
converts into the form of gas, that process is called evaporation, or you can say boiling also. ठीक है, जब हमारा लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब वो उड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को या तो बॉइलिंग बोलेंगे या फिर इवेपोरेशन. नेक्स्ट वन इज गैस टू आइस. जब ये गैस आइस के फॉर्म में बनेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन. ओके, व्हेन गैस convert into the solid directly into the form of solid, that is called deposition. Here is the another one. When you freeze the liquid, means water को जब आपको ice की form में बनाना है, solid form में, that process is called freezing. When you freeze the water, that process is called freezing. When you convert the solid into gas, learn this by this way. As for solid, as for sublimation. When you convert the solid into gas, that process is called sublimation, solid to gas. And when these gas particles convert into the liquid, that process is called condensation. So beta, this diagram you have to learn this. Okay, there is no alternate for this diagram. You have to learn this. There are three states of water, solid, liquid, and gas. When the solid becomes liquid, that process is called melting. When liquid converts into the form of gas, that process is called evaporation. When the gas converts into solid, that process is called deposition. And when the liquid becomes solid, that process is called freezing. When solid to gas, solid as sublimation. Solid to gas is sublimation. And when the gas converts into liquid, that process is called condensation. Next, our topic is sunlight. What is the importance of sunlight in our life? So it is also the most important part of our life. Plants use sunlight for making their food. We also use plants for eating. So if plants will be die, we also die. So, and we cannot see without sunlight. Without light हम देख भी नहीं सकते हैं. So इस सनलाइट में से जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फॉर सैनिक स्कूल, दीज आर दोज. स्पीड ऑफ लाइट एंड सनलाइट रीच ऑन अर्थ. सो जो लाइट की स्पीड है बेटा, वो सबसे फास्टेस्ट है हमारे यूनिवर्स में. इससे फास्टेस्ट किसी की स्पीड बनी ही नहीं है स्पीड ऑफ लाइट से. ओके, सो इट्स स्पीड इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर पार कर जाती है. 3 लाख डिस्टेंस, 3 lakh kilometer. Okay, and in how much time sunlight reach on earth? It takes 8 minutes 20 seconds to reach on earth. Then soil. What is the importance of soil? Soil is also most important for human beings, or for plants also, for animals also, for us also. So soil is also the most important part of our life. This is the most important topic of our environment. What we will do now, जो हम अभी करेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके. फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर एनवायरमेंट. देयर आर 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट अवर एनवायरमेंट. ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट को बेसिकली खराब कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव टू डिस्कस इट. फर्स्ट वन इज एसिड रेन. सेकेंड वन इज ग्लोबल वार्मिंग. थर्ड वन इज ग्रीन हाउस गैसेस. फोर्थ वन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. Fifth one is deforestation. Sixth one is pollution. We will discuss it. Acid rain, global warming, greenhouse gases, depletion of ozone layer, deforestation, pollution, air pollution, water pollution. First of all, let's take a look on acid rain. What is acid rain? When the harmful gases comes down with the rain is called acid rain. जब हमारी harmful gases अर्थ पर आती हैं विद द रेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिड रेन. अब ऐसी गैसेस जो एसिड रेन कॉज करती हैं, देयर आर 3 गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. देखिए बेटा इस डायग्राम में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये व्हीकल्स होते हैं, ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड वन मोर देयर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर आप एक रूम को क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर फायर, आग जला देते हैं, तो क्या होगा? एक ऐसी गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एसिड रेन कॉज करती है.
and when these three gases comes down with rain, that process is called acid rain. अब ये एसिड रेन लैंड को भी इफेक्ट कर रही है, वाटर को भी इफेक्ट कर रही है, और फॉरेस्ट को भी अफेक्ट कर रही है, और बिल्डिंग्स को भी. सो it also affects our environment. So acid rain is not beneficial for us. It is harmful for our environment. ये हमारे environment के लिए harmful है. Okay बेटा, what we did is today, first of all, water. What is the use of water? Water is helpful for human beings, animals, plants. Everyone needs water for their survivals. Then we did the most important topic, water cycle. What is water cycle? First of all, जो हमारा surface water होता है, जैसे रेन हुई, रेन के बाद बेटा जो वाटर होता है वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है सनलाइट की हीट से. अब वो वाटर कहाँ जाता है? इट विल गो इनटू द एयर. वो वाटर एयर के अंदर जाता है, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है. व्हेन वाटर वेपर्स reaches to the air, that process is called evaporation. When these water particles or water vapors reaches to the higher atmosphere or in the cloud, and there they condense, means ये इकट्ठे हो जाते हैं, that process is called condensation. When the clouds becomes too heavy, it will fall on the earth in the form of rain, hail or snow. Hail like rain water की form में. So when water vapors comes into the air, that process is called evaporation. When this water vapors goes into the upper atmosphere and there they condense, that process is called condensation. And when these water vapors come down on the earth in the form of rain water, hail means होता है like ओले ice के form में, and snow means बर्फ के form में गिरना. That process is called precipitation. So here is the definition of evaporation: when the surface water heated and convert into the form of water vapors and mix into the air, that is called evaporation. Condensation: when the water vapors reaches at the higher atmosphere and condense into the form of water and cool down. Means जब ये water vapors upper atmosphere में चले जाते हैं clouds में, that process is called condensation. When clouds do not carry the load of, or the clouds becomes too heavy, it will fall down in the form of rain, hail or snow. That process is called precipitation. Then we did the conversion of water. You have to learn this conservation. You have to learn this conservation of water. Conversion of water. Solid to liquid is called melting. Liquid to gas is called evaporation or boiling. Gas to solid is called deposition. Then liquid to solid is freezing. Solid to gas is sublimation, and gas to liquid is condensation. You have to learn this. Then sunlight. What is the importance of light? Sunlight is important for plants also, for our eyes also. This is the most important point in the sunlight, the speed of sunlight. Speed of sunlight is 3 lakh km per second. You have to learn this. Then sunlight reach on earth in 8 minutes 20 seconds. Sunlight 8 minutes 20 seconds में earth पर reach करती है. Then soil is also most important part of our life. What is the most important topic in our environment is factors which affect our environment. For Sainik school, for RMS, for RIMC also. ये जो topics हैं बेटा, ये ही most important है our environment के. So listen to these points very carefully. What is acid rain? Acid rain means जब harmful gases earth पर rain के साथ आ जाती हैं, that process is called acid rain. When the harmful gases comes down with rain is called acid rain. Now the gases which causes acid rain is, there are 3 gases which causes acid rain: sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon monoxide. Here is the diagram, take a look. The vehicles produce nitrogen dioxide. These factories produce sulfur dioxide. One more is there, carbon monoxide. What is carbon monoxide gas? From where it produced? It produced from a closed room. अगर आप एक रूम को क्लोज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं उसको, और उसके अंदर आग लग जाती है किसी भी तरह, फायर हो जाती है, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी.
और जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है. सो व्हेन द रेन कम्स डाउन, these gases mix into the rain, and that rain is called acid rain. And this acid rain pollutes the land also, pollutes the water also, and pollutes the forest also. It affects all of these things and buildings also. So it is harmful for our environment. If anybody drink this water, acid rain water, he will be die. उसकी डेथ भी हो सकती है अगर कोई फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, हार्म हो जाते हैं, जल जाते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एनवायरमेंट. So clear है बेटा, what is acid rain? Acid rain, when the harmful gases comes down with rain, that process is called acid rain. Acid rain causes three gases: sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and carbon monoxide. Then what is global warming and greenhouse effect gases? Listen to this topic very carefully. The gases which absorbs the maximum rays of sunlight, that is called greenhouse gases. Okay, वो gases जो maximum sunlight की rays को absorb करती हैं, these gases are greenhouse gases. And what is global warming? इन gases का absorb करना और sun earth के temperature का increase होना, that is called global warming. Clear हुआ? What is greenhouse gases? The gases which absorbs the maximum rays of sunlight. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो मैक्सिमम सनलाइट की रेज को एब्जॉर्ब करती हैं. एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. जो गैसेस मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही हैं उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर है? देखिए डायग्राम में सनलाइट की रेज पड़ी, अर्थ पर गैसेस ने एब्जॉर्ब किया. कौन सी गैसेस हैं वो? ग्रीन हाउस गैसेस. अब जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ओके, नाउ these gases are greenhouse gases which absorbs the maximum rays of sunlight, like carbon dioxide, chlorofluorocarbon, methane, water vapors, ozone layer, nitrous oxide. Let me tell you, carbon dioxide is produced by humans. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है सनलाइट की रेज को. क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम फ्रिज में यूज करते हैं, जो आपका नीचे वाला फ्रिज होता है जिसको कोल्ड रखने के लिए. जितनी भी चीजें आप कोल्ड रखने के लिए यूज करते हैं उनमें सीएफसी गैस यूज होती है. जैसे एसी हो गया, एसी में सीएफसी गैस यूज होती है. आपकी कार्स में सीएफसी गैस यूज होती है. ओके, कोल्ड स्टोर्स में सीएफसी गैस यूज होती है. मीथेन इज यूज्ड इन गैस सिलेंडर्स. जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर मीथेन गैस भी डाली जाती है. सो इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम रेज ऑफ सनलाइट. वाटर वेपर्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सनलाइट की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं. ओजोन लेयर इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग द सनलाइट. सनलाइट की रेज को ओजोन लेयर भी एब्जॉर्ब करती है. देन नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड पोल्यूशन से क्रिएट होती है. सो N2O is also a pollutant gas. So these all absorb the maximum rays of sunlight. Let me repeat again. What we did is, first is acid rain. You have to learn this. I will take your test in the evening. Acid rain and global warming and greenhouse gases. What is acid rain? When the harmful gases comes down with the rain, that harmful gases are sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and carbon monoxide. These gases causes acid rain. Then we did global warming and greenhouse gases. The gases which absorbs the maximum rays of sunlight, that gases are called greenhouse gases. And what is global warming? When the temperature of earth increases due to these greenhouse gases, that is called global warming. The names of greenhouse gases, you have to learn this. Carbon dioxide, C. Chlorofluorocarbon, C. CH4, methane. Then water vapors, ozone layer, and nitrous oxide. You have to learn this. Okay.
देन एयर वाटर पोल्यूशन आपको पता है पोल्यूशन क्रिएट होता है. वी विल डिस्कस इन अनदर क्लास ऑल्सो वेरी डीपली, बट फॉर नाउ डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का होल होना ओजोन लेयर में. So this is whole about our environment. So these are the factors which affect our environment is acid rain, global warming, greenhouse gases, depletion of ozone layer, deforestation and pollution. Acid rain, when the harmful gases comes down with rain, that is called acid rain. What is global warming? When the temperature of earth increases, that is called global warming. What is greenhouse gases? The gases which absorbs the maximum rays of sunlight, these are called greenhouse gases. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.